अफ्रीका राइजिंग के इस नए एपिसोड में उन सभी भारतीयों का स्वागत है जो अफ्रीका में इंटरेस्टेड हैं। अफ्रीका मैं जैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी, एक नया सब्जेक्ट है और हम सभी को अफ्रीका के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है जो यूरोप वालों को है या अमेरिका वालों को है। अमेरिका में चूँकि जो बसते हैं, वहाँ के जो नीग्रो हैं, वो सब अफ्रीका से आए हुए हैं, सो दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन अफ्रीका। और यूरोप में भी अफ्रीका की बस्ती का काफ़ी स्प्रेड हो रहा है। अफ्रीका की बस्ती का इतना स्प्रेड इंडिया में नहीं है, इसलिए हमको ज़्यादा पता नहीं है। मैं रिपीट कर दूं कि बाई 2050 अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बस्ती हो जाएगी 2.5 अरब, जबकि इंडिया की होगी मुश्किल से 1.7, और पूरे वर्ल्ड की बस्ती का चौथाई हिस्सा जो है वो अफ्रीकन्स का होगा। तो आप सोचिए कि उनका क्या इम्पैक्ट होगा, सब जगह वो फैले हुए होंगे। तो इन सब की चर्चा हम इसमें करते रहेंगे। तो पहला एपिसोड देखते हैं अफ्रीका की बस्ती के ऊपर, जो पॉपुलेशन डे के दिन जो है किसी ने बनाया है, और ये इसके क्या मायने हैं वर्ल्ड के लिए, उसकी चर्चा की है। सो लेट्स सी दिस वीडियो। The world marks World Population Day today, but many in the West issue dire warnings that by 2050, the population could rise to 9.7 billion. According to these experts, the high fertility rates in Africa will be the cause behind this population surge. Africa's rising population is a growing concern for many in the West, as the continent is expected to roughly double its population by 2050, adding 1.2 billion humans to its current population of 1.4 billion humans. The main driver of population growth in Africa is high fertility rates, which is driven by multiple factors, including high desired family size, better development in the regions, an ever-improving healthcare system, and ever-growing economies. These latest statistics seem to greatly trigger many in the West who are experiencing a huge population collapse. This has led some Western policymakers to go full racist and even call for an outright culling of Africans. Just recently, the newly elected Finnish government was plunged into scandal after one of its key minister, Vilhelm Junnila, was forced to resign after it emerged he had called for Finland to support abortions in Africa to combat the climate crisis. Junnila, who was the economic affairs minister at the time, was one of 19 cabinet members who wrote at the time that it would be justified for Finland to shoulder its responsibility by promoting climate abortion, which he claimed would be a great leap forward for humanity. Several African countries have been for decades receiving funding from intergovernmental organizations, NGOs, and philanthropic billionaires to adopt national population policies aimed at reducing population growth in their countries. These policies aim to lower fertility rates and improve access to family planning services. Michael Herman, the economic advisor with United Nations Population Fund, warned, "A growing population, of course, poses a challenge in some areas. Many countries have set forth very ambitious development goals. They have decided to meet the needs of people in terms of education, healthcare, housing, food, water, energy, and security. They want to create full employment for the people, and a growing population can raise the stakes in these efforts. It makes it harder to achieve these objectives, to achieve social progress, and also it might come with growing pressures on the environment." End of quote. So as the world marks World Population Day today, it is clear that the world has its eyes set on Africa's ever-growing population. Let us know in the comments below if you found this video informative. चलिए, अगला वीडियो है मोरक्को पे है। छोटा सा देश है, लेकिन उसमें जो है काफ़ी इम्पैक्ट है वेस्ट का, और ज़्यादातर गोरे लोग बसते हैं। अच्छी अच्छी वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं सुंदर नज़र आती हैं, और काफ़ी लोग मॉडर्न हैं, बाहर घूमते हैं, अच्छी तरह से खेती करते हैं। सो लेट्स लर्न अबाउट मोरक्को, ए पार्ट ऑफ अफ्रीका। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस देश की जो अफ्रीका का हिस्सा है, लेकिन अमीर और वाइट लोगों से भरा हुआ है। इस देश में आपको एक नीला और एक लाल शहर देखने को मिलेगा। इस देश की नदियां और पहाड़ काफी खूबसूरत है। देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के पीछे है किसान और पर्यटक। इस देश के लोगों में विदेशों में सेटल होने का भी गजब ही क्रेज है। दोस्तों, दरअसल हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अफ्रीका के खूबसूरत देश मोरक्को की। दोस्तों, मोरक्को को ऑफिशियली द किंगडम ऑफ मोरक्को कहा जाता है। इस खूबसूरत से देश का टोटल एरिया 446,550 स्क्वायर किलोमीटर्स है, लेकिन अगर इसमें सहारा मरुस्थल का एरिया भी जोड़ दिया जाए
तो यही एरिया 7,10,850 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। इसकी कुल आबादी लगभग 4 करोड़ के आसपास है। मोरक्को में 99.6% मुस्लिम रहते हैं। मोरक्को एक जवान देश है, क्योंकि देश की औसत उम्र 29 साल है। मोरक्को की कैपिटल सिटी है रबात, जो कि बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक शहर है। लेकिन जब बात बड़े शहरों की होती है, तो इस मामले में कैसाब्लांका नंबर 1 पर आता है। मोरक्को में सभी ऑफिशियल काम अरबी भाषा में किए जाते हैं। मोरक्को अपनी आर्किटेक्चर, फूड, कल्चर और लैंडस्केप सहित कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। ये देश कई आर्किटेक्चरल लैंडमार्क्स का घर है, जिनमें कैसाब्लांका में हसन दो मॉस्क, बाहिया पैलेस इन मैराकेश और वॉल्यूबिलिस के एंशिएंट रोमन रुइंस शामिल है। मोरक्को के पास प्राकृतिक सुंदरता का भंडार है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच से बहती नदियां, रेतीली जमीन, रेगिस्तान और सहारा रेगिस्तान तक पहुंचता हर एक रास्ता वाकई अद्भुत है। अगर आप एडवेंचरस है, तो आप ऊंटों पर भी सहारा जा सकते हैं। मोरक्को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा होने के बावजूद भी गरीब नहीं बल्कि एक विकसित देश है, और इसके पीछे हाथ है मोरक्को के किसानों का। जी हां दोस्तों, यहाँ के 50% से ज्यादा लोग किसानी से जुड़े हुए हैं। मोरक्को का शेफ चावन, जिसे ब्लू पर्ल ऑफ मोरक्को के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा शहर है जहां सब कुछ नीला ही नीला है। तो वही मैराकेश एक ऐसा शहर है जहां सड़कों से लेकर घर तक सब कुछ लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको रेड सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मोरक्को में शाम होते ही ग्रीन टी पी जाती है, और यहाँ ग्रीन टी को मोरक्कन विस्की के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि आर्गन ऑयल सिर्फ और सिर्फ मोरक्को में ही बनाया जाता है। मोरक्को में बॉलीवुड फिल्म्स का बहुत क्रेज है, और यहाँ की लड़कियां और औरतें शाहरुख खान की बड़ी फैन होती है, और यहाँ काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी होती है। दोस्तों, मोरक्को दो तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे खूबसूरत बीचेस देखने को मिल जाते हैं। मोरक्को रिफ माउंटेन रेंज और एटलस पर्वत श्रृंखला जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स का घर है, जो हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग और स्कीइंग के लिए मशहूर है। साथ ही मोरक्को में दुनिया का सबसे ऊंचा स्की रिजॉर्ट भी है। मिडिल एटलस रीजन के पास अजिलाल का उजोड वाटरफॉल्स मोरक्को में मस्ट सी प्लेसेस में से एक है। लेग्जीरा बीच नेचर की क्राफ्ट्समैनशिप का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां एक बार स्विमिंग करना तो बनता है। मोरक्को एक सस्ता और शानदार देश है, जहां एक साथ आप कई चीज़ों का मजा ले सकते हैं, जैसे पहाड़ है तो रेगिस्तान भी, शांति है तो गजब की मौज मस्ती भी, धर्म है तो पार्टी वाली नाइट लाइफ भी। देश की करेंसी की बात की जाए तो यहाँ चलता है मोरक्कन दिरहम, जिसकी कीमत भारत के 8 रुपये और 25 पैसे के बराबर है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला वीडियो नाइजीरिया के बारे में है। पहले भी इसके बारे में वीडियो देखते रहे हैं। नाइजीरिया जो है बाय 2050 वो अमेरिका से बड़ा हो जाएगा, और वर्ल्ड में इंडिया चाइना के बाद 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है वो नाइजीरिया होगा। शायद बहुत ज़्यादा तरक्की वो है इकोनॉमिकली नहीं कर पाए, लेकिन एक साइज बस्ती भी काउंट करती है। तो लेट्स वंस अगेन हैव ए लुक एट ए वीडियो अबाउट नाइजीरिया। Hi, welcome back to our channel. We want to look into a topic that sparks debates and discussions across the Africa continent. Is Nigeria truly the giant of Africa? Let's explore this question by dissecting various aspects of Nigeria's stature, but before we continue, please subscribe to our channel for more interesting stories. Nigeria, often dubbed as the giant of Africa, holds a significant position on the continent, not just in terms of landmass but also in various other domains. Even though some other Africa countries disagree with the Nigeria status as the giant of Africa, which I believe they may have their own reasons. Of course, it might be rivalry, might be jealousy or other reasons known to them, but you can't deny the obvious fact. Now let quickly states why Nigeria rightfully earns this title. Nigeria boasts a vast pool of human resources with a population exceeding 200 million. This demographic dividend presents both opportunities and challenges. Despite the challenges of unemployment and underemployment, Nigeria's workforce is dynamic, innovative, and resilient. Nigerian professionals excel in various fields globally, showcasing the nation's intellectual capital and potential beyond its people. Nigeria is blessed with abundant natural resources. From oil and gas to solid minerals and agriculture, the country possesses the necessary resources to drive economic growth and development. However,
The challenge lies in harnessing these resources efficiently and sustainably for the benefit of all Nigerians. In terms of GDP, Nigeria stands as one of Africa's economic powerhouses. With a diverse economy encompassing sectors such as finance, telecommunications, and entertainment, Nigeria plays a pivotal role in driving economic activities not only within its borders but also across the continent. Nigeria's influence extends beyond its economic prowess. The country has historically played a significant role in African politics, championing causes such as regional stability, peacekeeping, and conflict resolution. Nigeria's diplomatic efforts and leadership within regional organizations such as the African Union and ECOWAS underscore its commitment to fostering unity and progress across Africa. One cannot discuss Nigeria without acknowledging the resilience and boldness of its people. Despite facing numerous challenges, including security threats, infrastructure deficits, and political instability, Nigerians exhibit a remarkable spirit of resilience and adaptability. This survival mentality, coupled with the boldness to confront challenges head-on, defines the essence of Nigeria as the giant of Africa. In conclusion, Nigeria's status as the giant of Africa is not merely a title bestowed upon it. It is earned through a combination of factors, including its vast human and natural resources, economic prowess, diplomatic influence, and the resilience of its people. While Nigeria grapples with various challenges, its potential for growth and development remains undeniable. As we continue to navigate the complexities of the 21st century, Nigeria's role as a regional powerhouse will undoubtedly shape the future of Africa. What are your thoughts on Nigeria's position as the giant of Africa? इंडिया में हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स ने हमको कॉलोनाइज किया था और उससे पहले मुस्लिम्स ने रूल किया था, अगर ये सब ना होता तो हम लोग कैसी परिस्थिति में होते, क्या होता, वी डोंट नो। लेकिन हम लोग क्रिटिसाइज तो करते रहते हैं, पछताते भी रहते हैं कि ऐसा सब क्यों हुआ। सेम इज़ द केस विद अफ्रीका। अगर अफ्रीका कॉलोनाइज ना हुआ होता तो क्या होता, उसके बारे में वीडियो देखते हैं हम। अब अफ्रीका भी कोई एक देश तो था नहीं, तरह तरह के देशों का समूह था। फिर भी क्या इम्पैक्ट होता अगर, हालांकि मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि जो भी फॉरेन पावर्स आके रूल करके गई हैं उनका इम्पैक्ट काफ़ी हुआ है हर कंट्री पे, और हर कंट्री ने उनसे सीखा भी है। जैसे बहुत सारे कंट्री जो साउथ अमेरिका के हैं वो स्पेनिश इन्फ्लुएंस में रहे और कोई नुकसान तो उनका नहीं हुआ। तो लेट्स हैव ए लुक एट दिस वीडियो कि यदि कॉलोनाइज नहीं हुआ होता अफ्रीका तो क्या होता। Picture a world where Africa, the cradle of civilization, had never experienced the shackles of colonization. Imagine the boundless potential, the untamed innovation, the profound cultural richness that might have blossomed from such a world. Welcome to another episode on our channel, Imagine That. Africa, a land of diverse cultures, languages, and traditions, teems with raw potential. In a parallel universe where the scramble for Africa never occurred, what might we see? Envision a vibrant tapestry of nations, each with its own distinct identity, yet sharing a common thread of unity and mutual respect. In this world, the Kingdom of Congo might have grown into a formidable power, its influence stretching across the continent, fostering trade and diplomacy. The Ashanti Empire, with its wealth of gold, might have become a global financial hub, a Wall Street of the ancient world. The Zulu kingdom might have developed into a military powerhouse, its strategies and tactics studied in the world's finest military academies. Consider the innovations that might have emerged from an uncolonized Africa. The University of Timbuktu, one of the world's oldest educational institutions, might have become a leading global research hub, advancing science, technology, and philosophy. African traditional medicine, with its wealth of indigenous knowledge, might have revolutionized the field of healthcare, providing natural, effective remedies for a myriad of ailments. In the realm of culture, imagine the rich tapestry that might have been woven.
African music, art, literature, and dance, unhampered by external influences, might have evolved into unique, globally celebrated forms of expression. African languages, undiluted by foreign tongues, might have developed into complex, sophisticated means of communication, studied and admired across the world. The implications of an uncolonized Africa extend beyond the continent's borders. The global balance of power might have been radically different, with African nations playing a more significant role in shaping world events. Trade routes, alliances, even the course of wars might have been drastically altered, leading to a world vastly different from the one we know today. But this narrative isn't merely about imagining an alternate past. It's about recognizing the untapped potential of Africa. Today, despite the lingering effects of colonization, Africa is a continent on the rise. Its vibrant cultures, burgeoning economies, and innovative spirit are testament to the resilience and potential of its people. In this alternate history, Africa stands as a beacon of hope, a testament to the power of self-determination and cultural integrity. It's a story of what might have been, and a reminder of what can still be. As we close this thought-provoking journey, remember to like this video and subscribe to Imagine That for more deep dives into the realm of alternate history. And always remember, the future is yet to be written. So let's keep imagining, for it's in our dreams and thoughts that the seeds of reality are sown.